welcome back to the channel and to another vlog. Today's video is going to be very interesting because today I'm about to get my first tattoo ever. And I am nervous and I'm very excited at the same time. पर मैं थोड़ा ज़्यादा nervous हूँ because मैंने कभी भी अपने आप पे मतलब ऐसा I can't even imagine कि कोई needle ऐसा tattoo बनाने वाला है, but I'm excited for the outcome. Come to Mulund today to Avion Corporate Park to get our tattoo because हमने ये जो tattoo studio के बारे में काफ़ी अच्छे reviews पढ़े and stuff. And one of my friends got a tattoo from here, so I was like, let me go and get it from here because her tattoo was really good. And I told Ajinkya that you come along with me because at least I'll have company and some mental support while I'm getting myself inked because I am so scared of the needle. I'm scared of getting injections, so you can imagine how scared I'm gonna be getting the tattoo. Say hi to Amrit. He's gonna be doing my tattoo today and I'm so excited. तो अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, जो मैं अभी नहीं रिवील करूँगी because वो सरप्राइज है कि what's the tattoo gonna be all about. But I'm sure, do you like the idea of my tattoo? 100%. Yeah, so I'm very excited and I don't want to show you, but he just made really crazy tattoo fonts for me and I just can't wait to get it. Seriously. अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि अचानक से टैटू क्यों? So that I'll tell you in some time after I show you the tattoo. Setup is done and now it's time for me to get started with my tattoo. And according to Amrit, it takes around 15 minutes for the setup and 15 minutes for the tattoo, which is pretty quick. मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. I was telling Ajinkya कि I hope 2 घंटे में तो हो ही जाएगा. But thank you for making it easy on me and saying it's gonna take only 15 minutes. And now I'm just gonna get to the tattoo. I never knew getting a tattoo is like such a comfortable experience, like if you lie down and keep your hand rested and then get a tattoo. Nice. This is my tattoo. It says in his time, and thank you Amrit, this looks amazing. I mean, I am so happy and I'm telling you the key while doing a tattoo, keep talking. You won't realize the pain, but it was such a good thing. Thank you so much. I am feeling so happy right now. In his time. Yes. टैटू करके हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विद माई टैटू. इसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी थोड़े अच्छे से, लेकिन फिलहाल आई एम वेरी थैंकफुल टू अमृत. ही इज़ अ ग्रेट टैटू आर्टिस्ट. सो इन केस एनी ऑफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू गेट योर टैटू, कम टू Insane Tattoos. in Mulund, Avion Corporate Park. And my tattoo costs about 3,500 rupees in case you're interested to know, which I'm sure you guys are interested to know. कि अगर किसी को कोई बड़ा tattoo चाहिए, like those massive ones, so how do you charge? So after 10 inches, it is on ours. Per hour cost is 5,000 rupees. And जो दूसरे artists है who work with us, उनके 3,000 और 4,000 respectively per hour cost. Okay, I'll be leaving their address here, and also you can follow them on YouTube in case you want to see their work. The name of your channel is Insane India Inc. So you can follow them on YouTube, you can follow them on Instagram, you can see their address here down below, and you can just contact them if you want to get a tattoo. And trust me, I didn't know कि tattoo वाला experience इतना smooth होने वाला है. मैं इतनी nervous थी और अजिंक्य को पता है कि I was so scared, but trust me, it was like a piece of cake. It was so good. Thank you so much. I'm glad it was very normal for you. Yeah, I'm just in love with my tattoo right now. A surprise for both of you guys. Okay. One is this. Oh my god. The second is this. Oh my God, This look is at so that. good. Did you sketch it on your own? Yes. This Guys. took around 5 hours. This took around 12 hours. Insane. Like is this is Ricardo. insane. And this is my photo from Bali, I remember. I like the smile that you have here. Thank you so much. This is the sweetest gift ever. That is a realistic effect. We just got this beautiful gift from these two lovely people and I don't know what to say.
I mean, just look at this. This is so beautiful. I'm going to frame this in my house. The sketch. Wow, thank you so much. One of my favorite photos. I really like this one. So we are done with the tattoo और अभी टाइम है घर जाने का और हम लोग मुलुंड में शाम का 4 बज रहा है, right? हाँ, 4 साढ़े 4. It's 4:30 in the evening और अभी हम लोग को बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है. So we are gonna try to go as fast as we can. और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है. So let's hope not. ओ माई गॉड, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था. ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए मुझे घर आते आते बिकॉज इतनी ट्रैफिक थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी. सो वी हैड टू स्टॉप एंड कम बिकॉज हम स्कूटी पे आ रहे थे. बट फाइनली आई रीच्ड होम एंड आई जस्ट गॉट फ्रेश. एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अचानक से टैटू क्यों बनाया. When I was 18 years old, I always wanted to make a tattoo at that time. पर तभी दिमाग में कोई specific idea नहीं था और मैंने बहुत सोचा तभी कि should I get one or should I not. फिर मैंने सोचा you know what, let it be. शायद कभी फ्यूचर में बना लूँगी. और ये टैटू जो मैंने आज बनाया है in his time, that has a very very important meaning in my life. Basically in his time is from the Bible. It is Ecclesiastes 3:16. तो वहाँ से लिया है मैंने ये. इन हिज टाइम का मतलब होता है कि गॉड हैज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. एंड द रीज़न वाई आई मेड दिस टैटू राइट नाउ इज़ बिकॉज every time I look at this tattoo it should remind me that I have to be patient because कभी कभी मैं बहुत impatient हो जाती हूँ लाइफ में. ऐसा हो जाता है कि I want something and I don't get that. Even after I work hard I feel like क्यों नहीं मिल रहा है मुझे. I just get very very irritated. So this tattoo and this whole verse that I took from the Bible because of which I made this tattoo, it just means that be patient. Good things will come but on their own time when God wants them to come in your life. And इसलिए ये tattoo बनाया. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि इतनी खुशी हुई मुझे जैसे ही टैटू बना बिकॉज टैटू बनने के पहले आई वॉज सो नर्वस कि नहीं पता क्या होने वाला है, सही करी हूँ कि गलत करी हूँ. इट्स गोना हर्ट मी अ लॉट बिकॉज मुझे सुई से सही में बहुत ज़्यादा डर लगता है. बट थैंक्स टू अमृत, ही वॉज रियली रियली स्मूथ. आई मीन इसने इतने अच्छे से और इतने फास्ट टैटू बनाया कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा टैटू बन के रेडी भी हो गया. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड बनने के बाद तो आई एम लाइक कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड. आई थिंक मैंने 1000 बार तो अपने टैटू को देख लिया अपने हाथों पे. आई एम लाइक I am just in love with it. I am so happy. He told me that there are many steps that I have to do to maintain this tattoo because अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है. पर ये क्या होता है कि अभी थोड़े दिनों के बाद इसका डेड स्किन खुद ब खुद निकलेगा एंड आई हैव टू कीप मेंटेनिंग इट टू गेट लाइक ऑलमोस्ट दिस कलर मेंटेन्ड. तो ये अभी बहुत ख्याल रखना है मुझे इस टैटू का. एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई मीन आई नो इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्विक बट देन आई जस्ट वांट टू शेयर something with you guys and I hope you guys enjoyed the video. If you did, don't forget to hit the like button, do subscribe to my channel if you haven't already. I will see you guys soon in another vlog. Bye.